in this video we will learn to calculate the Laplace transform of f dash t if you know the Laplace transform of f t. बाय डेफिनेशन तो आप जा ही सकते हो कि 0 से इंफिनिटी में f dash t e raised to power minus st dt को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए. That is the usual way. But if you know the Laplace transform of f t, then how can you calculate the Laplace transform of f dash t? So it has a formula. It says that if a function is piecewise continuous, let's say if f is continuous and f dash is piecewise continuous, then for any particular interval, you can say that Laplace transform of f dash t, it is equal to s into Laplace transform of f t minus f of 0. So this is the formula you can use to calculate the Laplace transform of a derivative. So how to prove this thing that this will happen? So let us see what is the Laplace transform of f dash t. Because if you know this formula, then you don't have to apply any definition again and again. आप किसी भी nth डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो by using a particular definition. ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, हम nth डेरिवेटिव तक भी जनरलाइज इसका करेंगे. So let us see Laplace transform of f dash t. It is 0 to infinity e raised to power minus st f dash t. अगर हम मान रहे हैं कि f dash t एक पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है. मतलब ये पूरे 0 से मान लो किसी इंटरवल 0 से a के बीच में, 0 से a where a is a real number के बीच में ये एक पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है. सो हम कंसीडर करेंगे अब इंटीग्रल. कंसीडर द इंटीग्रल 0 to a e raised to power minus st f dash t dt. और एंड बाद में इसकी लिमिट a अप्रोचेस इंफिनिटी ले लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा बाद में. ठीक है. तो अब हम e raised to power minus st f dash t dt कंसीडर करें तो हम मान के चल रहे हैं कि f dash t एक पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो ये पीसवाइज कंटिन्यूअस है तो इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी इस 0 से इंटरवल में. सो हम मान लेते हैं कि k1 k2 एंड सो ऑन टिल kn इसकी discontinuities in the interval 0 to a. So according to the definition of the integral हम इसको तोड़ सकते हैं from 0 to k1 e raised to power minus st f dash t dt plus k1 to k2 e raised to power minus st f dash t dt and so on कहाँ तक a n to a e raised to power minus st f dash t dt. We can break it in this way. अब इन सब इंटरवल्स में इसके कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं रही, मतलब अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. So just integrating it by parts. So what we will do, we will consider this as the second function and this as the first function. So we will do integral of this function. So integrating by parts, this first expression we get e raised to power minus st into ft from 0 to k1 minus 0 to k1 माइनस एस इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एस टी बिकॉज इसका डेरिवेटिव कर देंगे इंटू एफ टी. अब ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए. फॉर द सेकेंड एक्सप्रेशन वी गेट दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ टी फ्रॉम के वन टू के टू माइनस के वन टू के टू माइनस एस ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ टी.
राइट। सिमिलरली इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा e raised to power minus st ft an to a minus an to a minus s into e raised to power minus st ft dt, राइट। सो ये हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन आ चुका है। नाउ वी विल स्मार्टली ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। हाउ, लेट मी शो यू। अब आप देखिए, इन टर्म्स को कंसिडर कीजिए, बॉक्स वाले टर्म्स को। व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट e raised to power minus s k1 f k1 minus e raised to power 0 is 1 into f of 0. And now you will solve this one. What it will become? Plus e raised to power minus s k2 f of k2 minus e raised to power minus s k1 f of k1. सिमिलरली जाते 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 चले जाएंगे ये सारे टर्म्स। अब आप देख रहे हो कि ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये टर्म कैंसिल हो रही है। सिमिलरली माइनस एस के टू वाली नेक्स्ट वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली लास्ट वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, सेकेंड लास्ट के साथ। सो फाइनली हमारे पास यहाँ से सिर्फ माइनस एफ जीरो ही बचेगा, माइनस एफ जीरो। एंड फाइन फ्रॉम फाइनल वी विल ऑल्सो गेट ई रेज टू पावर माइनस एस ए एफ ऑफ ए। तो बॉक्स वाली टर्म्स में से तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। और इन इंटेग्रल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं टू राइट 0 to a e raised to power minus st into s ft dt, right? So this is the thing till now which we are getting. अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप हमें पता है f जो है वो फंक्शन है, दिस इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो e raised to power minus sa into fa, this is less than equal to some k e raised to power minus s minus a into a. So when you will take limit a approaches infinity, this will go to 0 because f is of exponential order. That exponential order is a positive order. So this thing will go to, when a approaches, when we take limit a approaches infinity, this thing, this expression will go to 0 and this we will be left with. And you will get that Laplace transform of f dash t, this thing is equal to s into 0 to a, 0 to infinity, e raised to power minus st ft dt minus f0, which will exactly equal to s into Laplace of ft minus f0. So in this is the proof of this thing. You can calculate the Laplace transform of any derivative of any function using this formula. So अगर हम माने कि nth derivative तक का f, f dash and so on, fn minus 1 तक सारे continuous हैं और fn जो है वो piecewise continuous है, तो आप Laplace transform of f raised to power n भी निकाल सकते हो। How? Nth derivative of f using the formula s raised to power n, Laplace transform of ft minus s raised to power n minus 1 of f0 minus s raised to power n minus 2 f dash 0 and so on minus fn minus 1. So this is the generalized formula to calculate the Laplace transform of the nth derivative of the function, which you can use provided all these functions should be continuous and those should be of the exponential order. Right? The Laplace transform of the nth derivative of function will exist and will be given by this particular expression. Thank you very much.